Challenges of Secondary Education in India. Presentation by Dr. Syed Hayat Basha, Assistant Professor of Education, Aligarh Muslim University Center, Malappuram, Kerala, from India. Introduction. Education is the birthright of every child in India. Although India has made significant progress in various fields, we have been facing various problems of children, such as child labor, malnutrition, child abuse, etc., which can be solved with the light of knowledge. The central government and state governments have formulated various schemes to ensure that no child remain uneducated. However, there are various problems faced in our education system. Although there has been a significant increase in the number of school-going children, they face a number of problems. The problems of senior secondary school education are dealt with in this chapter. We must make consistent and concerted efforts to remove the obstacles and find solutions to the problems. Secondary education spreads over the age 15 to 18 years. These years of transition and adolescence are the most crucial years of the student's life. Students' physical structure undergoes a fast change during this period, and there are various sort of emotional transformation and mood swings. This is the continuation of the previous slide. This is the stage where students have to shift from education to the world of work. Secondary education must equip the students by sharpening their skills and talents to make this transition quite smooth. The girls have to experience more difficulties in this transition because of age-old beliefs, social bias, prejudice, and taboos prescribed for females in the society. As there has been a sharp decline in female sex ratio in most of the states of India in the recent decades, efforts should be made to develop a gender-friendly curriculum. The curriculum must be designed to nurture natural talents and capabilities of the students, such as language, logical and analytical ability, physical fitness, sports, general awareness, nature and environment, etc. These crucial years in students' life must offer suitable opportunity for nurturing and honing their inherent skills. Various commissions pointed out the defects in secondary education from time to time. This is also continuation of the previous slide. It has been generally felt that secondary education in India gives more emphasis on academics and fails to enable students to handle the problems of day-to-day life efficiently. It does not prepare them for pursuing higher education adequately. Many of the students tend to fail in the first year of their degree course in the examinations conducted by the university. The students don't find themselves confident and suitable to enter life confidently. The training and education available there don't equip the students well so as to get a good and respectable job helpful in leading a good life. Some problems of secondary education are discussed here. हिंदी में हम अभी चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है। इस देश में सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बहुत अहम है। कई सारे बालक और बालिकाएं शिक्षा से दूरी इख्तियार कर रहे हैं।
उसकी वजह यह है कि उनको कई सारे प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं को सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से भारत में माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इन सब शिक्षाओं के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में कई सारे कमीशंस और कई सारे कमीशंस ने रिकमेंडेशंस दी है कि किस तरह से इस शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं। आइए अब हम चंद समस्याओं के बारे में यानी सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। Let us discuss first problem in secondary education, that is undue importance on examination. Most of the schools nowadays are concerned about giving good results instead of stressing on an all-round development of the students. The schools emphasize on the result of the students. Students are forced into cutthroat competition with the aim of scoring high marks. Values seem to have been relegated to the background in most of the schools. There is an atmosphere of fear, tension, pressure by the teachers, parents, and well-wishers to obtain very high marks. Unable to bear this much burden, many teenagers get depressed. Some even resort to extreme steps like committing suicide. सबसे पहली समस्या हमारे भारत में ये है कि भारत में कई सारे बच्चों पर ज़ोर दिया जाता है इम्तिहानात में हाईएस्ट स्कोर हासिल करने के लिए। हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने पर बच्चों को ज़ोर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यानी विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास ठीक तरीके से बच्चों का नहीं हो पाता है। हमारे भारत में पेरेंट्स का और टीचर्स का और सोसाइटी के दोस्तों से बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर और डर लगा रहता है। हर कोई बच्चों से उम्मीद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसको मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करे। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे टीनेजर्स, ख़ास तौर पर 14 से 18 साल की उम्र वाले बच्चे या 19 ईयर्स तक की उम्र वाले बच्चे बहुत ही अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो कभी कभी सुसाइड भी करने के लिए कदम उठाते हैं। Teachers' status in society. The teaching profession is not getting due respect and recognition in society, because of which many brilliant and intelligent youth prefer to pursue other professions which give them high status and hefty salary. In fact, teachers shape the future of students as a potter shapes his pots. Teachers play an important role in providing education like a gardener. They instill inspiration and zeal in students' lives. In fact, their progress and development depend upon how they are taught by the teachers. Indian culture has held the teachers on a very high and exalted place. Guru, which is considered equal to God, as children are the hope of tomorrow. It can be said with certainty that the quality and effectiveness of any educational system ultimately depends upon the dedication, effectiveness, and competency of the teachers. प्रिय मित्रों, समाज में शिक्षकों की स्थिति।
समाज में शिक्षकों की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि टीचरों को यानी शिक्षकों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है और उनके साथ जो सलूक करना है, ड्यू रेस्पेक्ट जो देना है, वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट नौजवान टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशंस में जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है और समाज में उनका हाई स्टेटस होने के बजाय उनका स्टेटस, उनकी स्थिति ख़राब होती जा रही है और उनका मुकाम गिरता जा रहा है। जिस तरह से एक कुम्हार हांडी को बनाता है, उसको शेप देता है, इसी तरह से एक शिक्षक बच्चे का फ्यूचर बनाता है, यानी उसका मुस्तकबिल बनाता है। इसीलिए टीचर्स का समाज में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, शिक्षक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। जैसे एक माली बाग की हिफाजत करता है, इसी तरह से शिक्षक समाज का निर्माण कर रहा है और समाज के नौजवानों में, समाज के बच्चों को आला से आला मुकाम तक पहुंचा रहा है। इसीलिए समाज में शिक्षक को गुरु कहा जाता है और वो गुरु को गॉड के इक्वल यानी भगवान के समान ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आज के बच्चे कल के शहरी हैं, यानी कल का मुस्तकबिल है, यानी फ्यूचर के बच्चे हैं। बच्चे कल का फ्यूचर है, इसीलिए बच्चों का ख्याल तभी रखा जाएगा जब टीचर का स्टेटस आला रखा जाएगा। Dear friends, this is also continuation of the previous slide. The status of teachers has also been highlighted by the Secondary Education Commission in its report as under. We have already referred to the importance of the teacher's social status. There is a growing feeling that the lead in this matter should be taken by persons in high public positions who should show special recognition of the status and dignity of teachers and treat them not on the basis of their salary and economic status, but on the importance of the nation building work that is entrusted to them. If they do so, society would follow their examples in due course. At important public and ceremonial functions, the head of the state or the ministers or the district officer concerned should invite representatives of the teaching profession and give them a position of honor. Many in the profession have shown outstanding merit in their work and are entitled to receive due recognition of it from the state as well as from the society. They must also be consulted in all important matters pertaining to education so as to strengthen their sense of professional responsibility. प्रिय मित्रों, समाज में शिक्षकों का स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए और उनके मुकाम को अच्छे से अच्छा बढ़ाने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि टीचरों का आला से आला मुकाम समाज में होना चाहिए, उनकी हालत बेहतर से बेहतर होना चाहिए। समाज में शिक्षकों को बहुत डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको एक स्पेशल मुकाम देना चाहिए। उनकी सैलरी और इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखना चाहिए। हर जगह जहाँ पर भी पब्लिक फंक्शंस हो या तो किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, तो उन सब में
वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और स्टेट के मिनिस्टर्स टीचरों को सबसे इज़्ज़त का मुकाम देने पर जोर दिया है। इसीलिए टीचर को कहीं पर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर की हर जगह ज़रूरत होती है। इसीलिए हर जगह उसको इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी टीचर का मुकाम आला से आला बनाने के लिए सिफारिश किया है। This is also continuation of the previous slide. Dear friends, the quality of good teachers in India has been eulogized by even foreigners. Years ago, Sir Alexander Johnstone wrote a letter to Mr. Charles Grant during the year 1746 to 1823, President of the Board of Control on Education System of India, in the following words: Education has always, from the earliest of their history, been an object of public care and of public interest to the Hindu governments on the peninsula of India. Every well regulated village under the government has a public school and a public school master. The system of instruction in them was that which, in consequence of its efficiency, simplicity, and cheapness, was a few years ago introduced from Madrasa into England and from England into the rest of Europe. Every Hindu parent looked upon the education of his child as a solemn duty which he vowed to his God and to his country, and placed him under the schoolmaster of his village as soon as he attained his 5th year. The ceremony of introducing him for the first time to the schoolmaster and his scholars was publicly recorded and was attended with all the solemnity of a religious observance. A prayer being publicly offered upon the occasion to the figure of Ganesha, the Hindu god of wisdom, which was at the head of every Hindu school, imploring him to and the children in their endeavors to learn and become wise. प्रिय मित्रों, विदेशियों ने भी शिक्षक के गुणवत्ताओं को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया है। सर अलेक्जेंडर जॉनस्टन ने जब मिस्टर चार्ल्स ग्रांट को लेटर लिखा तो उन्होंने हिंदुस्तान में टीचरों को किस तरह से, शिक्षकों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और इसी तरह से वहाँ पर भी, यूरोप में भी और वहाँ के फॉरेनर्स, विदेशियों ने भी टीचरों का मुकाम बढ़ाया है। जब भी बच्चा यहाँ पर जैसे ही 6 साल की उम्र का बच्चा हो जाता है, बच्चे की उम्र 6 साल होती है, तब वो सबसे पहले वहाँ पर वहाँ के गुरु को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो उससे परिचय कराते हैं। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर चार्ल्स ग्रांट ने बताया है। सर अलेक्जेंडर जॉनस्टन ने भी लेटर में उन्होंने बताया है कि वहाँ किस तरह से विदेशियों ने किस तरह से उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर गुरु के साथ होता है, ये बात भी इसमें बताई गई है। Dear friends, the another problem of secondary education is lack of trained and dedicated teachers. Earlier, there used to be shortage of teachers recruited in the state. With the passage of time, now there is adequate number of teachers.
Nevertheless, the quality of teaching has gone down considerably. There are various reasons for this downfall. Some attribute it to corruption, due to which deserving candidates are not recruited. There is lack of proper training on methodologies of teaching. Many teachers lack dedication and consider this profession only as a source of income. For building a better society, teachers must be embodiments of values, and their life should be a living example for the students. Though the private schools charge high fees, they are in no way better. The teachers in private schools are generally not as qualified as those in government schools. Most of the private schools have the sole aim of making money. They pay very meager salary to the teachers, who tend to encourage the students to have private tuitions with them at their homes. प्रिय मित्रों, इस स्लाइड में हम एक और समस्या शिक्षकों की बताएंगे, जो है शिक्षक डेडिकेटेड और ट्रेन नहीं है, यानी जिसकी वजह से एक वक्त था कि जब शिक्षकों की कमी थी, तो हर स्टेट ने शिक्षकों को नौकरी दी है, रिक्रूट किया है। तो उसके बाद फिर टीचरों के, शिक्षकों के हालत सही नहीं है। नाउ देयर इज़ एडेक्वेट नंबर ऑफ़ टीचर्स। अब बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन उन टीचरों में, उन शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है। जिस तरह से क्वालिटी होना चाहिए उस तरह की क्वालिटी शिक्षकों में नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षक की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। उसमें से एक अहम वजह ये भी है कि वो शिक्षकों को उनकी क्वालिटी के आधार पर अपॉइंटमेंट करने के बजाय शिक्षकों को अपॉइंटमेंट करने में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। इसी तरह से टीचिंग में यानी शिक्षकों के पढ़ाने के तरीक़ों में भी कमी होती जा रही है। शिक्षकों के अंदर जो निष्ठा है उसमें भी कमी हो रही है, और जिसकी वजह से इफ़ेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता भी गिर रही है। तो एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए एक शिक्षक को मूल्यों का अवतार होना चाहिए, यानी एम्बोडिमेंट्स ऑफ वैल्यूज़। अगर एक शिक्षक बहुत अच्छा होता है तो उसको देखकर उसके जो स्टूडेंट्स हैं यानी छात्र हैं वो भी सीखते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उसको, एक शिक्षक को लिविंग एग्जाम्पल्स होना चाहिए उसके छात्रों के लिए। प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षक तो मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तनख्वाह पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको पैसा बनाने का मकसद होता है प्राइवेट स्कूलों का, लेकिन वहाँ के टीचर्स भी प्राइवेट ट्यूशन करते हुए वो अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, another problem is more emphasis on English language. English is nowadays considered to be a passport for success in life. Official language, that is Hindi, and other vernacular languages are neglected to a great extent, particularly in urban areas. Most of the books are available in English language only. The medium of instruction in science, engineering, and technology subjects is invariably English, and there are very few books in Hindi or other vernacular languages on these subjects, as a result of which these languages are relegated to the background. So, the knowledge of English has become a
prerequisite for obtaining high status and suitable and lucrative jobs. However, it must be noted that English had been introduced in the middle of the 19th century by the British rulers for some specific reason, as is evident from Macaulay's Minute on Education, 1835. We have to educate people who cannot at present be educated by means of their mother tongue. We must teach them some foreign language. The claim of our own language, it is hardly necessary to recapitulate. It stands preeminent even more the languages of the West. It bonds with works of imagination, with models of every species of eloquence, with historical compositions, with just and lively representations of human life and human nature, with the most profound speculations on metaphysics, morals, government, jurisprudence, and trade, with full and correct information respecting every experimental science which tends to preserve the health, to increase the impact, or to expand the intellect of man. Dear friends, as it indicates from the slide that more emphasis is giving on English language at secondary level, because in our society we considered English as a passport for success in our life. So official language is Hindi and most of the material is available only in English language. That is why it is very difficult for the students to get instructions or to get any material in science, English and technology subjects. So that is why more focus is given on English language. So Macaulay's Minutes also on Education 1835. So they introduced English language and they have given emphasis on English language for certain reasons, for their specific reasons like trade and also for training in the war and etc. etc. प्रिय मित्रों, तो प्राथमिक शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अंग्रेज़ी भाषा पर यानी इंग्लिश भाषा पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। ये समझा जाता है कि अंग्रेज़ी बात करने वाला ही ज़िंदगी में कामयाब आदमी है। अंग्रेज़ी में, इंग्लिश भाषा में कई सारी किताबें अवेलेबल हैं। इसकी वजह से इंग्लिश सीखना एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि मैं अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी में भी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी में भी अच्छे से समझ में आएगा। Dear friends, this is also continuation of the previous slide. Macaulay's Minute on Education 1835. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and intellect. Mahatma Gandhi clarified his position on use of language in his reply to Tagore as under: English is today studied because of its commercial and so-called political value. Our boys think, and rightly in the present circumstances, that without English they cannot get government service. Girls are taught English as a passport to marriage. I know several instances of women wanting to learn English so that they may be able to talk to Englishmen in English.
I know husbands who are sorry that their wives cannot talk to them and their friends in English. I know families in which English is being made the mother tongue. Hundreds of youth believe that without knowledge of English, freedom for India is practically impossible. The cancer has so eaten into that in many cases, the only meaning of education is a knowledge of English. Dear friends, the problem of English language. English is more emphasized. English language more emphasis on English language rather than the local languages. So this is what Macaulay also felt. Macaulay's in Minutes on Education 1835, and Mahatma Gandhi also shared his feelings with Rabindranath Tagore. He shared the value, he shared the importance of the language, English language. He said that our boys, mean Indian boys, they are learning English language for the purpose of business, or and girls are learning English for the purpose of marriage, because girls are taught English as a passport to marriage. So many people are learning English because of their to reply uh, to talk with the wives are learning English to talk with the friends of the husbands. So it is considered as, if you are not having knowledge of English, that means there is no meaning of education. If you are having knowledge of English, that means you have a good education and a quality of education. So this is the lack of English language has become a cancer at secondary education. So this is what Mahatma Gandhi also shared his feelings with Tagore. प्रिय मित्रों, आपने कुछ ना कुछ समझा होगा इस स्लाइड से। यहाँ पर इंग्लिश भाषा पर बहुत ज़ोर दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा पर भी, और इंग्लिश भाषा ना आने की वजह से, उसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये समझा जाता है कि उनके पास किसी तरह का क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इंग्लिश भाषा का ज्ञान है तभी समझा जाता है कि उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है या बहुत अच्छी शिक्षा है। लड़कियों को ये समझा जाता है कि जब अंग्रेज़ी सीखते हैं तो उनके लिए, उनको शादी करने के लिए एक पासपोर्ट मिल जाता है। गर्ल्स आर टॉट इंग्लिश एज ए पासपोर्ट टू मैरिज। सो इसी तरह से बहुत सारी मैरिड वाइफ्स यानी वाइफ्स भी सीख रही हैं अंग्रेज़ी, उस वक्त सीखती थी ताकि अंग्रेज़ों को रिप्लाई दे सकें। Dear friends, this is also a continuation of the previous slide. All these are for me signs of our slavery and degradation. It is unbearable to me that the vernaculars should be crushed and stopped as they have been. I cannot tolerate the idea of parents writing to their children or husbands writing to their wives, not in their vernacular but in great poet. I do not want my house to be stuffed. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar, or a slave. I refuse to put the necessary strain of learning English upon my sisters for the sake of false pride or questionable social advantage. I would have our young men and young women world languages as they like, and they expect them to give the benefits of their learning to India
and to the world, like a boss, a roy, or the poet himself. But I would not have a single Indian to forget, neglect, or be ashamed of his mother tongue, or to feel that he or she cannot think or express the best thoughts in his or her own vernacular. Mine is not a religion of the prison house. It has room for the least among God's creation, but it is against insolence, pride of race, religion, or color. This is what the dialogues between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore with regard to English language and vernacular language or regional languages. प्रिय मित्रों, ये पिछले स्लाइड का ही कंटिन्यूस कन्वर्जेशन है जो रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दरमियान इंग्लिश भाषा को लेकर हुआ था और जिसको मैकॉलेस मिनट 1935 में भी मेंशन किया गया है. Dear friends, this is also continuation of the previous slide. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, also expressed her views on the teaching of language in India as under, let me ask a question, in what country has a language developed as a result of politics? Why does India today occupy the position of a principal language? Why has it spread to so many countries of the world and has such a high status? Has English developed because it was the language of official work at the Whitehall? Or did the English poets, writers, novelists, and traders who traveled to the far corner of the earth develop this language? Let us not think that a language is built and developed by official work only, and in the absence of such work, it will die out. Indian languages were suppressed under foreign rule. It was therefore natural that during the freedom struggle and after we became independent, our people should have a special sentiment for their languages and should be keen to promote them. It is not a question of sentiment only. It is important for the country that our languages should develop. So, in this slide, Mrs. Gandhi also given importance to language, regional languages rather than English language. प्रिय मित्रों, इस स्लाइड में मिसेस इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने भी रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ाने की बात की है और इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़ोर नहीं दिया है. जबकि मैकॉलेस मिनट में अंग्रेज़ों ने इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेज़ी भाषा है अपनी तिजारत के लिए या तो अपने बिज़नेस करने के लिए, अपने नौकरों को रखने के लिए या ग़ुलामी करवाने के लिए वो इंग्लिश सिखाना चाहते थे, अंग्रेज़ी भाषा सिखाना चाहते थे. Another important problem in secondary education is no emphasis on practical training. Practical training is considered a waste of time in many schools. Students are not provided the right environment to develop their practical knowledge and skills. There is lack of proper laboratories, instruments, or staff. Students get only theoretical knowledge, which results in the students coming out of school without the knowledge of technology and its practical use. As a result, they are not able to get suitable employment. So, dear friends, in this there is no emphasis on practical training, only emphasis on theoretical training. That is the reason students are not getting employment after completion of their secondary education. So, some schools think that
Practical training is a waste of time, and they are not providing, schools are not providing a right or proper environment to develop their skills, their knowledge. And there is also lack of facilities like proper laboratories, instruments or staff, and students are getting only theoretical knowledge, which results waste of time, and they will not get knowledge of technology, and also they will not get practical training. That is the reason, that is why they are unable to get suitable employments after completion of their secondary education. प्रिय मित्रों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता है स्कूलों में। स्कूलों में ज़्यादातर ये समझा जाता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना ये एक वक्त को ज़ाया करना है, यानी समय को वेस्ट करना है, इस तरह से समझा जाता है। और स्कूलों में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो कौशल है, जो कौशल बच्चों का कौशल और ज्ञान नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से एक वजह ये भी है कि वहाँ पर स्कूलों में लैबोरेटरीज़ की फैसिलिटीज़ ठीक तरीके से नहीं होती हैं, नहीं हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स भी ठीक तरीके से नहीं हैं, और स्टाफ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लैबोरेटरीज़ तो होती हैं, लेकिन उसमें स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ नहीं होता है। तो ज़्यादातर यही समझा जाता है कि बच्चे को थियोरेटिकल नॉलेज दी जाए और प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर ज़ोर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बच्चा अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास पास करने के बाद वो फिर अनएम्प्लॉय बना रहता है, उसको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। Dear friends, lack of facilities to improve personality. This is also one of the major problem at secondary education in India. The students who go for higher studies out of the state face many problems and suffer from inferiority complex. Most of them lack good communication skills. Though they are good in their subjects, they do not have all-round personality development. Communication skills take a back seat in most schools, where the emphasis is only on rote learning. If opportunities are not provided to students for development of all their skills, their overall personality does not develop. So this is the problem at secondary education in India. Many students are lacking personality development. When they are going outside of the state, they feel inferiority complex and they lack good communication skills. They are good in their subjects, but they don't feel that their personality is fully developed. So communication skills are most important to develop. What is happening in our school system, much emphasis is given on rote learning rather than developing personality and rather than developing their knowledge and skills, especially communication skills. So opportunities are also not provided at the school level, at secondary level. That is why their overall personality is underdeveloped and they feel inferior complex. प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़, यानी कई सारी सुविधाएं नहीं होती हैं माध्यमिक शिक्षा में, जिसके कारण बच्चा एक डर महसूस करता है दूसरे स्टेट में जाकर हायर स्टडीज़ यानी उच्चतर शिक्षा पाने के लिए वो बहुत डरा रहता है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है। भले उसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो समझता है कि उसकी पर्सनालिटी के विकास में, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से
वो अगर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद भी वो अनएम्प्लॉय बना रहता है, जिसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है और उसके अंदर जो स्किल्स है उसमें भी कमी होती है और जो उसके नॉलेज यानी ज्ञान में भी वो कमतर महसूस करता है। Lack of sports facilities and motivation. This is also one of the important problem at secondary education in India. Most of the schools do not have proper playgrounds. Physical education teachers are also not available. So this is the problem. Most of the schools are not having proper playgrounds, so they are lacking sports facilities, and physical education teachers are also not available. So if the grounds are available, teachers are not available. Without teachers, they cannot play properly. Students are not motivated to take part in physical activities or to take up any sports. When teachers are not available in the schools, obviously they will be demotivated and they will not get any kind of motivation for playing various sports activities and to develop their physical health. Sports play an important role in the overall development of students, because sports play important role in overall development of the students. Without facilities and motivation to take up sports, the overall physical and personality aspects of the development of the child suffers. If we are really concerned about the future generation, steps have to be taken to solve the above issues and ensure a happy, stress-free and quality education to the young students. The youngsters, if guided properly, are capable of achieving great heights and doing India proud. प्रिय मित्रों, हमने देखा है कि कई सारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह एक ये है कि वहाँ पर प्लेग्राउंड यानी खेल कूद करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड भी वहाँ पर नहीं होता है, नहीं है। और अक्सर स्कूलों में फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स भी नहीं हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। जब उनका मोटिवेशन नहीं होता है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी कमी हो जाती है और उनकी पर्सनालिटी डेवलप भी नहीं होती है। तो अगर हम बच्चों को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को अगर हम अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो स्कूलों में और फिर वहाँ पर प्लेग्राउंड्स की भी फैसिलिटीज़ दी जाए और बच्चों को खेल कूद करने के लिए ज़्यादा इनकरेज किया जाए, मोटिवेशन किया जाए, तभी वो अपने आप को बच्चे हैप्पी फील करेंगे, स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और फिर एजुकेशन में क्वालिटी आ सकती है। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम अपने देश को प्राउड करना है, देश पर फ़ख्र करना है, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते हुए उनको मोटिवेट करें खेल कूद करने के लिए। क्योंकि एक ज़माना था कि जब लोग मना करते थे खेलने कूदने से, लेकिन आज का ज़माना है जब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो वो एक हेल्दी पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। Parents' indifference and lack of supervision. This is also one of the problem at secondary education in India. Mother is said to be the first teacher of the child and home is considered to be the first school where parents' time, attention, supervision and involvement plays a dominant role in a child's all-round development. Parents these days provide a child with all the materialistic needs and even admit her in a good school and feel that their duty ends there.
Most of the parents do not give children proper time and attention to attend to their emotional, moral, and educational needs. As a result of this neglect, the children sometimes get addicted to bad company and are distracted from study. Some of them fall an easy prey to obscenity and vulgarity and violence being shown on internet and TV, fail to perform well in studies and don't fulfill the expectations of their parents. Such neglect of children drives them towards unsocial and unethical activities such as terrorism, eve teasing, and various other type of crimes. However, if parents become aware of their responsibility and pay proper attention on their children and their education, it will prove very beneficial for the students. प्रिय मित्रों, जैसा कि इस स्लाइड से आपने समझा होगा या जाना होगा कि पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स माता पिता बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बुरे रास्तों पर चलते हैं। कहा जाता है कि मदर सबसे पहली टीचर होती है, जिसका प्यार, जिसका टाइम और जिसकी निगरानी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ स्कूलों में अक्सर देखा गया है पेरेंट्स बच्चों को मटेरियलिस्टिक नीड्स यानी बच्चों को जो पैसा चाहिए या एडमिशन चाहिए, अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं और फिर उनके लिए एटीएम कार्ड तक दे देते हैं और फिर ये नहीं देखते हैं कि बच्चा वो किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह की कंपनी वो इख्तियार किया है और किस तरह से वो स्कूल में उसका व्यवहार होता है। तो वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे की निगरानी करें ठीक तरीके से तो हो सकता है आज के बच्चे कल के बहुत बड़े नागरिक बनकर देश की सेवा और खिदमत कर सकते हैं। Dear friends, we have another problem at secondary stage, secondary education in India, that is peer pressure. Peer play a pivotal role in student life as their social, emotional, and character development takes place during this period. During this special period of transformation, they learn many a lesson of support, reliance, and maturity through mutual interactions. However, friends can also have negative influence on their personality. They may learn many bad habits as skipping the classes, stealing and cheating. Some students are influenced to the extent that they imbibe the bad habits of smoking, alcohol, drinks, drugs, or other addictions and unhealthy practices. The kids give in to peer pressure because they want to make a high image in the eyes of their friends. Sometimes they copy and follow their friends, and lest they might be rejected, neglected, or scoffed at if they don't go along their peers. So friends, due to peer pressure, students may adopt bad habits like skipping the classes, stealing and cheating, and sometimes they do not want to participate in the bad habits, but due to the pressure of their colleagues, due to their image, so they will forcefully indulge in bad habits. So peers play very important role. So प्रिय मित्रों, पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव या दोस्तों का प्रेशर या तो साथियों का प्रेशर बच्चों के ऊपर माध्यमिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से
बच्चे अच्छा भी रास्ता इख्तियार करते हैं और बुरा भी रास्ता इख्तियार करते हैं। बुरा रास्ता इख्तियार करते हैं जैसे क्लासेस छोड़ देते हैं और कहीं चोरी में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी चोरी करने लग जाते हैं, या फिर धोखा देने की बुरी आदत उनके अंदर आ जाती है, या तो फिर वो सिगरेट स्मोकिंग करने लगते हैं, या तो फिर वो अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ड्रग्स और दूसरी ख़तरनाक से ख़तरनाक बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी आदतें वो बुरी आदतें इख्तियार करते हैं, इस वजह से करते हैं कि या तो उनके ऊपर पीयर का प्रेशर होता है, यानी उनके दोस्तों का, साथियों का प्रेशर होता है, या तो फिर वो अपने इमेज को हाई बनाने के लिए, यानी वो फिर ऐसी बुरी आदतों में वो भी शामिल हो जाते हैं। अगर बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में ही अगर बच्चों को माध्यमिक शिक्षा से ही अच्छे साथी मिलते हैं तो वो फिर एक अच्छा उनका मुस्तकबिल बनता है या फ्यूचर बनता है। अगर उनको बुरे दोस्त मिल जाते हैं तो फिर वो उन्हीं की सोहबत में रहकर, वो उन्हीं के साथ रहकर अपनी लाइफ स्पाइल करने के चांसेस उनके लिए बहुत होते हैं। जैसे बुरी आदतें हैं क्लास छोड़ देना, चोरी करना और धोखाधड़ी करना और स्मोकिंग करना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी शराब वगैरह पीना, इस तरह की कई सारी बुरी आदतों में वो शामिल हो जाते हैं। लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम at secondary education in India. An ideal education system should focus on character building and inculcating good values in students. Rich cultural heritage of India and its diversity in geography, culture, values and beliefs are found nowhere else in such abundance in the world. As human beings learn more effectively by listening and observing than simply cramming, Indian students definitely have an edge over students of other countries. But students of this generation lack practical knowledge. They are trained to memorize the points like a parrot. Students' talent and interest are not given importance. If a child has the talent of singing or dancing or drawing, he should be encouraged. Instead, they are discouraged to leave their favorite hobby and talent. Their interest is nipped in the bud and they are forced to choose a career which their parents insist on. It is like killing their spirit. However, due to dwindling values in students in recent decades, there are problems like increasing incidents of moral turpitude, indiscipline, wayward behavior, misuse of electronic gadgets, MMS scandals, and suicides related to academic performance. प्रिय मित्रों, जैसा कि आपने कुछ न कुछ समझा होगा इस अंग्रेजी वाली स्लाइड से, तो यहाँ पर एकेडमिक्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इसके बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता है। तो बच्चों को किसी चीज़ में शौक़ होता है तो पेरेंट्स का किसी चीज़ में शौक़ होता है, तो पेरेंट्स ज़बरदस्ती बच्चों को एक ही करियर चूज़ करने के लिए मशवरा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है और वो इम्बैलेंस हो जाता है। एकेडमिक लाइफ ना उसकी ठीक तरीके से होती है, ना ही उसके अंदर जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है, वो डेवलप भी नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर बच्चे को गाना गाने का शौक़ है, पोएट्री करने का शौक़ है, शायरी करने का शौक़ है, या डांसिंग करने का शौक़ है, या ड्राइंग करने का शौक़ है, तो बच्चे को उसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को प्रमोट करने के बजाय पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको परेशान करते हैं और उसको उनकी पसंद की करियर चूज़ करने के लिए
उनको फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कई तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह इसका मिसयूज़ भी करते हैं और फिर वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और फिर वो इमोरल भी बन जाते हैं, जिसकी वजह इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करें और उनके अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट को प्रमोट करें। Dear friends, so far whatever we have discussed in this slide, we will discuss about the summary of the uh, entire PowerPoint presentation. There are so many challenges and problems at secondary education in India. So we have also discussed along with the challenges its problems. The first problem is undue importance on examinations. Teachers' status in society, lack of trained and dedicated teachers, more emphasis on English education, no emphasis on practical training, lack of facilities to improve personality, lack of sports facilities and motivation, parents' indifference and lack of supervision, peers' pressure, lack of balance between academic and values of life. प्रिय मित्रों, हम इसका सारांश आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहली समस्या हमारे माध्यमिक शिक्षा में यह है कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस एग्ज़ामिनेशन पर दिया जाता है, यानी परीक्षा पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। टीचर्स स्टेटस इन सोसाइटी, शिक्षाओं की समाज में शिक्षाओं की स्थिति क्या है वो भी हम इसमें पता लगाए हैं। लैक ऑफ ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीचर्स, तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे भारत में डेडिकेटेड टीचर्स नहीं हैं और ज़्यादातर अनट्रेन टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स नहीं हैं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, मोर एम्फोसिस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। नो एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड मोटिवेशन, हमारे पास स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और उसको मोटिवेट करने के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स भी नहीं हैं। पेरेंट्स इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ सुपरविज़न, माता पिता की निगरानी भी बच्चों पर नहीं होती है। माता पिता बच्चों को एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन उनको कई सारी फैसिलिटीज़ भी दे देते हैं, लेकिन उन पर सही से निगरानी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। पीयर्स प्रेशर, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में अक्सर पीयर्स का प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चा जब एडोलेसेंट में होता है तो बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से ज़्यादा सीखने की कोशिश में रहता है। एडोलेसेंट पीरियड में बच्चे गलत रास्ता इख्तियार करने की कोशिश में रहते हैं। अगर उनको अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे साथी मिल जाएं तो वो अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर बुरे साथी मिलते हैं तो बुरा रास्ता वो इख्तियार करते हैं, जैसे सिगरेट पीना और चीटिंग करना और स्टीलिंग करना, यानी चोरी करना, धोखाधड़ी करना, स्मोकिंग करना, शराब वगैरह पीने की आदत डालना। तो इस तरह के गलत रास्ते पर बच्चे जाने के चांसेस होते हैं। तो लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे एकेडमिक्स पर और वैल्यूज़ ऑफ लाइफ पर ज़्यादा वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब
पेरेंट्स की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अपने जो टैलेंट है जैसे डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर इन बच्चों को जिसके अंदर उनकी रुचि है अगर उसको पहचाना नहीं जाएगा तो बच्चे वो फिर निराश हो जाते हैं और वो नाउम्मीद हो जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको ढूंढे और उसी को प्रमोट करने की कोशिश करें, ना कि बच्चे जो ना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को करने पर मजबूर ना करें। Dear friends, in this slide we have some sample questions for term and examinations. Number 1 question, describe various problems and challenges with special reference to secondary education in India. Number 2 question, why more emphasis on English language? Explain with examples. Number 3 question, what do you understand by peers pressure at secondary education in India? Number 4th question, why students are imbalanced between academics and value of life? Discuss. Number 5th question, why teachers are not dedicated and untrained at secondary education? Explain with current examples. प्रिय मित्रों, ये चंद प्रश्न हैं जो आपको टर्म एंड एग्ज़ामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, तो इनको लिखते रहें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA. Thank you for watching my EduDreams. Don't forget to like, share and subscribe to my EduDreams.